family and gender. Last class, I will discuss about living condition in industrial areas, and also we discuss how different social classes evolved during the process of industrialization. So, industrialization, urbanization brought a lot of changes in the size of a population. So, जनसंख्या फैमिली एवं जेंडर भितर आज हम देखिए जे इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा यह किभଳି भाবে प्रभावित ହେଲା also we shall know population growth in Europe and its implications यूरोप रे जो जनसंख्यार वृद्धि ହେଲା ତାହା 18th century पर ही द्रुत गति रे वृद्धि पाइथिला particularly in western Europe in comparison to eastern Europe पश्चिम यूरोप रे अत्यधिक मात्रा रे अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि देखा गला बिकॉज western Europe was industrially advanced in comparison to eastern Europe এবং after completion of this unity you will know the family structure परिवार गठन and the changes in family structure pre industrial society रे परिवार परिवार केउं प्रकार परिवार थिला एवं शिल्पायन हवा परे से परिवर्तन परिवार आकार स्ट्रक्चर तार संज्ञा डेफिनेशन से परिवर्तन हला बिकॉज lot of changes that happened as a result of industrialization and urbanization शहरीकरण एवं शिल्पायन फल परिवार अफेक्टेड है एवं परिवार डेफिनेशन परिवर्तन आसला एवं सहित there is a transformation in gender relationship men and women relationship रे परिवर्तन आसुची because industrialization mark modernization means development of transportation and communication गमनागमन सुविधा हला एवं लोक मान भीतर पॉलिटिकल यूनिटी आसला इकोनॉमिक ग्रोथ हला लार्ज स्केल वुमेन बर्तमान वुमेन माने मध्य आसी इंडस्ट्री काम करले सो डेफिनेटली आगु जहाँ आम कॉन्सेप्ट थिला बा नारी मानकर भूमिका समाज रे कोन तांकर कर्तव्य कोन तांकर रोल सेथिर मध्य परिवर्तन आसुची ए जो परिवर्तन आसुची सेटा रे मध्य ए शिल्पायनर मध्य अवदान रहिछि so in this unity we shall discuss about demographic and family patterns so first of all we also know what is demography. So demography is the statistical study of a human population in the changing number of births, deaths, diseases, etc. in a community over a period of time. But निर्दिष्ट समय भितर a particular area रे जनसंख्यार किभଳି भाबरे परिवर्तन आसुची एवं जो परिवर्तन आसुची so that is due to birth rate change asuchi death rate change asuchi and also diseases many European countries since mid 18th century since 1754 witnessed a decisive growth in population जनसंख्या वृद्धि रे बा जनसंख्या रो वृद्धि परिलक्षित हेउची 1754 एवं ये जो परिवर्तन देखा देउची दैट वाज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तार कारण होची जे गोटे कारण होची जे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शिल्प विप्लव एंड फॉर एग्जांपल इन 1850 मसीह यदि हम यूरोपियन पॉपुलेशन को कैलकुलेशन नबा देखा जे एक्सेप्ट रशिया को छाड़ी देले कि यूरोप रे यूरोपियन पॉपुलेशन थिला 210 मिलियन एंड बाय 1950
1950 मसीहा बेलू population by European population reached at 393 million. So over a period of 100 years, the population increased to 183 million. And already we have discussed in my previous I have already discussed in my previous class that industrial rapid industrialization by प्रकृत in a true meaning industrialization started after 1840. ତେଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇଛି ଶିଳ୍ପର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇଟା ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ about 50 million people migrated from Europe to America, South Africa, Australia during this period. As a result of there are so many factors responsible for this migration, and we shall discuss in our due course of time. So we shall discuss what are the factors of a population growth. जनसंख्यार वृद्धि होची हम देखते कंटिन्यूअसली अष्टादश शताब्दी आग को देखिले 18th century 19th century and onwards also we see there is a constant rise in population, the growth of population we see. So ये जो जनसंख्यार वृद्धि क्रमागत भाव में आम देखुचे जे कंटिन्यूअसली जनसंख्यार वृद्धि होची तार केतोटे मध्ये कारण होची से कारण गुडी होची प्रथम कारण होची the gap between births and deaths, जन्म मृत्यु रे फांका, that's a फांक means that's a gap. So second cause is migration, स्थानांतर माइग्रेशन जस्ट टिके आगु कहली जे 1850 रु 1950 भितर 50 मिलियन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तार अनेक गुडी कारण अछि इंडस्ट्रियल मझिरे यूरोप रे मध्य इकोनॉमिक स्लम्प हला, स्लम्प मांदावस्था सृष्टि हला। मांदावस्था सृष्टि हेले लोक माने से देश छाड़ी अन्य देश चलिले एवं पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, सिविल वॉर, these are also factors, unemployment। तो ये सब जो समस्या देखा जाए गोटे देश से देश लोक मैंने अन्य देश को जावाई निजर जीविका निर्वाह करने इनकम रोजगार करने स्थान छाड़ुं विदेश अन्य देश को जमी आम देखु बांग्लादेश चली संरक्षण को नहीं जो भाया पॉलिटिकल टर्मोइल चली राजनीतिक हटचम चली। सो देयर इज अनसर्टेनिटी। तो लोक मैंने अनसर्टेनिटी भितर रहा चाहूना दे नीड सिक्यूरीटी सुरक्षा दरकार। तेणु से माइग्रेशन हुए वार समय माइग्रेशन हुए। आउ another factor that is responsible for the rapid growth of a population during this period is that is changes in fertility and mortality. Industrialization, modernization आसिया फल मैरेजेबल जो एज रे विवाह करुले से देखिए मैरेजेबल एज इनक्रीज अधिका हला एवं मैरेजेबल एज जिते लेट मैरेज हेले तो फर्टिलिटी पीरियड कमी एवं से दैट अफेक्ट्स द बर्थ रेट एंड मोर्टालिटी रेट जो कमुची मृत्यु हार कमुची सो बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड आल्सो जमती कि विभिन्न प्रकार जो एपिडेमिक है जे सब डिजीजेस होता तार निदान से डिजीज कारण खोजिकी पाइबा थ्रू लैबोरेटरी देखो तो कहीं माने तार कारण कहीं कौन कारण जो रोगटा हो सब जिन जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो जंत्रपाति नूतन जंत्रपातिर इन्वेंशन है उद्भावन है द्वारा बहुल क्षेत्र में मोर्टालिटी रेट को कमी दिया कारण एक्जाक्ट नेचर ऑफ द डिजीज रोगर प्रकृत माने ठीक सठिक निदान करा जाई पारेला डायग्नोसिस करा जाय पारे ठीक डायग्नोसिस कराला तो ठीक डायग्नोसिस हैला प्रॉपर मेडिसिन दिया
So it was a factor. Mortality rate कमिला particularly the birth rate बा जन्म समय जो प्रकार mortality होतिला सेथिरे परिवर्तन आसिला. So migration, what is migration? So, migration is the movement of a person or people from a country, locality, place of residence, etc., to settle in another as a result of poor labor standards, high unemployment, and overall health of a country's economy. गोटे देशर आर्थिक अवस्था केते स्वच्छल अछि, health of the country's economy, unemployment, बेरोजगारी. So all the factors, these are also affected migration. Full factors include higher wages, उच्च दरमा मिलवा, हायर वेजेस पे मध्य लोक माइग्रेट करते, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जोटा कि सर्विस कंडीशन भल, जोटे काम करने फेवरेबल कंडीशन थाए, एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जोठारे जीवन मानर जीवन धारण करियार मानक उच्च, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जोटी शिक्षार उन्नति करने सुविधा था. So these are the factors that affected the growth of a population. So it is generally argued that acceleration in population growth in the 19th century Europe was directly linked to decline death rate and a stable or increase in birth rate. And this happened, ये जो घटना घटला birth rate that is a declining death rate and a stable increase in the birth rate. Then there is also noticeable decline in normal death rate and also deaths caused by famines, epidemics and a war. साधारणतः जो नॉर्मल डेथ रेट रे खाली जे डेथ रेट रे इंक्लाइन जो डिक्लाइन कला बा कमिला, रोग रे पड़ी जो लोक माने मृत्युवरण करुथिले सेथिरे मध्ये कमिले, जो माने रोगणा हेकि मृत्युले रोगी माने जो मृत्युवरण करुथिले सेथिरे तांकर उन्नति आसिला हेल्थ फैसिलिटी रे बेनिफिट पाई. बिसाइड्स दैट आल्सो देयर इज आल्सो डेथ कॉज्ड बाय फैमिनीज. फैमिन रे जो माने मृत्युले दुर्भिक्ष रे अनाहार मृत्यु जो होतिला, खाद्य शस्यर अभाव घटुला, से लोक मृत्युवरण करते, से समस्या रहा. बिकज आफ्टर फार्म मेकानाइजेशन, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है, अधिक प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन जो उत्पादन बढ़ला, तो उत्पादन बढ़ले अधिक जनसंख्या रही खाद्य जोगाइबार असुविधा रहा ना. तेणु ये जो समस्या एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है द्वारा अनाहार जो मृत्यु होता फैमिली जो मृत्यु होता से सुधार आसला. एंड ऑल्सो एपिडेमिक्स दैट हैपेंड ड्यू टू द प्रॉपर डायग्नोसिस. एपिडेमिक्स जो लोक मैंने मृत्युवरण करते सुधार आसला कम, कहीं प्रॉपर डायग्नोसिस हो पारा. एंड वार, then increase in agricultural productivity resulted in the disappearance of famine. Medical facilities helped in checking epidemics and diseases, modern medical facility, and a decline in mortality to great extent due to a reduction in infant mortality. शिशु मृत्यु हार से कम है. Increase of a life expectancy, अधिका बंचिवा लाइफ एक्सपेक्टेंसी टा हमर बढ़िला. दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िवा, शिशु इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कमिवा, शिशुर मृत्यु हार कमिवा, ये सब पछरे जो फैक्टर विषय रही से गुटे कहूँ एजुकेशन. हेल्थ फैसिलिटी ता सहित मध्य एजुकेशन, बिकज वी नो education is panacea to all social evils. समस्त प्रकार सामाजिक व्याधिर मूल औषधि है, सर्वौषधि हूँ शिक्षा. शिक्षा माध्यम सचेतन सृष्टि करागला. माँ मैंने शिक्षार सुविधा ने कहीं
ଆମର ରାଇଜ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମଡର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆସୁଛି ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେନ୍ ମିଡିଲ ଆମର ଯେଉଁଟା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଦେଉଛେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିବା ବା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କଲା ପପୁଲେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହେଉଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କମି ଆସୁଛି ତ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ ଅଲସୋ ପିପୁଲ୍ ବିକେମ୍ ମୋର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ in medieval period in pre-industrialized period people were more focused on everything art architecture literature साहित्य रचना जहाँ भी सब थिला ये सब थिला गॉड सेंटर किंतु रेनेसांस हला रिफॉर्मेशन हला नव जागरण धर्म संस्कार आंदोलन वैज्ञानिक साइंटिफिक इनोवेशन ये जो सब देन इंटेलेक्चुअल ट्रेंड बौद्धिक ज्ञान विकास लोक मैंने अंध भाव किसी विश्वास कले सो थ्रू रिजन थ्रू निजर बुद्धि निजर एक्सपीरियंस एवं डायरेक्ट द्वारा ही सत्य सत्य कौन सिद्धांत उपनीत जो पहुँचुले उपनीत होते से निजर बुद्धि व्यवहार करते रिजन अप्लाई करते लॉजिक तर्क तर्क लगाते जमी ता पूर्व जमी आम मिडियाल पीरियड था अंध भाव जहाँ चर्च कहला एवं जो मैंने थियोलॉजियंस थे धर्मजाजक मैंने जहाँ कहले से अंध भाव मानि ना कहीं साहस कर राष्ट्र विरुद्ध जाओ कि साहस कर कि चर्च विरुद्ध कहीं मुँह खोल किंतु जो इंटेलेक्चुअल्स माने वोल्टेयर रूसो मोंटेस्क्यू हॉब्स सब पॉलिटिकल कल्चरल all the buddhism and asile and they exposed the rottenness of the administration the state structure defects and they emphasized on individual liberty that am bolle liberalism udarwad asla nationalism socialism so all these things changed the thinking process लोकमानकर चिंता करिवार जो चिंता करवा शक्ति परिवर्तन आसूची जोटा कम कहते पैराडाइम शिफ्ट सो ना मैंने अलग एंगल चिंता करते तार सुफल मिलला बेटर सैनिटेशन परिमल व्यवस्था सहायक है ये सब परिवर्तन होगा फल आमर पॉपुलेशन ग्रोथ है The 19th century Europe also witnessed increase in mobility of a population due to social and economic change. Periodic slums in European economy. Europe रे जतले आर्थिक मंदावस्था देखा जाउछि that forced unemployed workers जो माने बेरोजगारी हला जो माने को रोजगार नथिला जो माने unemployed थिले से माने मूव कले they moved to Australia and to other places. Earlier also we discussed that the people moved to America, South Africa, Australia because these countries are thinly populated and also सेठी लोक संख्या बा जनसंख्या बहुत कम थिला density was very low but these countries are full of natural resources प्राकृतिक संपद रे भरपूर climate was good natural resources water and everything that is plentifully available that is plentifully available तो तेणुकरी प्राकृतिक संपदर भरपूर परिपूर्ण थिला क्लाइमेट भल थिला जलवायु भल थिला लोक संख्या कम थिले तेणुकरी से बसवास कले एवं परवर्ती समय सेटल थे द डेवलपमेंट ऑफ अगेन आल्सो वी सी दैट इज ये जो जीवा आसीबा गोटे देश छाड़ी अन्य देश को जो लोक माने चली जाउथले से तार आ गोटे कारण से डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज गमनर परिवहन व्यवस्थार वृद्धि होगा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड
communication. Railways, they use railways, coming up a steam ship, Baspacharata, Jahaja, railways. So the invention of these things or the coming of steamship and railways facilitated, has sugam kala. ये जो यातायात गमन गमनागमन परिवहन व्यवस्था को यह सुगम कला सुविधा करेला एंड नाउ पीपल felt safer and also safely ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପାରିଲେ and also it was a speedier ଜଲ୍ଦି कम समय भितर गोटे लॉन्ग डिस्टेंस ସେମାନେ कवर कर पाले and also cheaper सस्ता रहला so these are the factors that help the growth of population गोटे जगह माइग्रेशन ऑफ वृद्धि पाइला जेमति मु आगु कहली जे सिविल वार हला रशिया रे स्पेन रे तो लोक से जगह छाड़ी कोने जगह चलले पॉलिटिकल मूवमेंट हला जर्मनी and also we see now new commercial market also developed that attracted the people to go to take up new venture growth of transportation due to growth of transportation and communication system so demographic बा जनसंख्या जो परिवर्तन घटिला ये परिवर्तन जो समग्र यूरोप रे यूनिफॉर्म नथिला किछि देश रे पॉपुलेशन रो ग्रोथ अधिका बा हार अधिका थिला एवं किछि देश रे जनसंख्या वृद्धि रो हार कम थिला इट वाज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट यूरोप बट ये जो परिवर्तन आसला बा जो जनसंख्या वृद्धि ला हम देखु जे इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ होबा ठारू जते आगु आगु शिल्पायन वृद्धि होची ता सहित मध्य जनसंख्या मध्य वृद्धि घटुची तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सहित बा इन शिल्पायन सहित जनसंख्या जो परिवर्तन होची ता सहित मध्य पॉजिटिवली रिलेटेड let us we shall discuss about family and industrialization how family life how the structure of family परिवार जो गठन जो व्यवस्था थिला हमर जो चौथ परिवार है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो सेटा को हम देखिए कि भली भाबे प्रभावित हेउची जेतले शिल्पायन हे नथिला प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे कि भाबे परिवार गठन थिला केउ प्रकार रो परिवार थिले परिवार कहले हम कोन बुझे सो let us see so family first of all परिवार हेउची family a family is a group of two or more persons related by birth marriage or adoption where live together साधारणतः परिवार कहले हम जो हम न्यूक्लियर फैमिली देखुचे बापा मां एवं पिला जो मॉडर्न सोसाइटी हम देखुचे न्यूक्लियर फैमिली तो एक्सटेंडेड फैमिली हम देखुचे जे that grandfather grandmother father and then also husband wife so many missing duties सब रहते the extended family so most of the that is the it is saying that the pre-industrial society is known for extended family समझते मिली मिसी की पापा बड़ा पापा जजेमा जजेबापा सासू ससुर सो ये जो समझते रहले बा गोटे जगह रे दादा बड़ा बापा ये समझते मिसी की गोटे जगह रे रहते अंडर वन रूफ and that was very much helpful to maintain your stress level so लोक माने तो स्ट्रेस होतला आजकल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कंपटीशन आसला बा कैपिटलिस्ट सिस्टम रे पूंजीवाद जो व्यवस्था रे लोक माने अत्यधिक चापग्रस्त हो जासुंती कहे कि ना से मानक पछर केई ना शहर रे गां छाडी के शहर रे रहले शहर रे एकुटिया रहले पछपटे के रहले नहीं पछको किंतु आगरो कोन था असुविधा हेले भी कौन सी समय रे यदि फाइनेंशियल लॉस हेले मध्य सेमन विलेज रे गां कौन से प्रकार काम धंदा मिलुथिला एवं सेमन सेतुरु भरण पोषण होथिले तो शहर रे जो माने से काम करले तो सेमन गोटे इनिशिएटिव फील होछि पछरे सेमन किछि रहउना माने केही लोक गोटे मोरल सपोर्ट हला दबा पे ना होते तो इट स्ट्रेस लेवल बढ़ी जाए as a because of urbanization in urban center so family life रे मध्ये परिवर्तन आसुची समय मुख्यतः
जे यदि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हम कंपेयर कले इस परिवर्तन लक्ष्य करा जाए किंतु किछि स्कॉलर मध्य एथिरे राजी माने एकमत नुहंती जे इंडस्ट्रियल सोसाइटी अर्थ होची जे बा इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा फଳରେ न्यूक्लियर फैमिली ग्रोथ हला दा शिल्प विप्लव पूर्वरु न्यूक्लियर फैमिली एकक फैमिली स्वामी स्त्री पो ये जो अलग है रहिबा सेपरेट रहिबा ए सब नथिला प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे मध्य न्यूक्लियर फैमिली थिला ता मध्य किछि स्कॉलर्स आर्गु बा जुक्ति बाढंती सो किंतु यह सत्य जे इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा फଳରେ सामाजिक बा फैमिली स्ट्रक्चर रे परिवर्तन होइछि एवं निश्चिंत रूपे लोक मैंने सहर जो मैंने छाड़ी आसते सेपारेट आस मूल फैमिली आसिकी से बसवास करती बा जो स्ट्रेस लेवलटा अधिका रहे सो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन influence the change or affected the change or as a result of industrialization changes happened in the family structure pre-industrial society in a pre-industrial society family was important unity of reproduction production consumption and socialization फैक्ट्री सिस्टम न आसिया पूर्व तो डोमेस्टिक सिस्टम थिला परिवार लोक माने मिसिकी समस्त काम निज निज भितर शेयर करके करूथिले and a shift and there is a change industrialization as a process the shift होची shifting from extended family to small family or a nuclear family as a result of industrialization शिल्पायन जोगु सेथिरे परिवर्तन होची शिफ्ट होची एंड आउ कोन परिवर्तन होची ए जो सब फैमिली लाइफ भीतर देखा गला जे लेट एज ऑफ मैरिज or both men and a woman and a separate household वेस्टर्न यूरोप रे एवं सेटा डिबेट करा जायछि किछि स्कॉलर मध्ये ते एग्रीमेंट नहंते से मानु कहबा कथा होछि जे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे मध्ये स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली मध्ये थिले देन वेस्टर्न यूरोप रे हम देखो जे जनसंख्यार जो सब वृद्धि हला बा जहाँ सब परिवर्तन है दैट वाज क्लियरली नोटिस्ड एवं कहीं ये वेस्टर्नाइजेशन आसूची ईस्टर्न यूरोप रे स्टिल से पर्यंत एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है नथिला पर्टिकुलरली एंड अदर है नथिला जेहेतु सेटा पॉपुलेशन संख्या कम थिला एंड द पिक्चर इमर्जेस फ्रॉम द दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिड नॉट create nuclear families in Western Europe. At the same time, it is not true that industrial revolution did not bring any change in a family and a household. It is suggested that in England, live-in servants in a family declined. जो माने रहउतले rich people त सदस्य मान को servant मध्ये रहउतले and also the age of first marriage especially for women increased in parts of Western Europe like Austria, France, Germany small conjugal household was a common pattern swami stri related that is called small conjugal household whereas in Eastern Europe large complex household existed kahingi na सेठारे एबे भी अधिकांश लोक कृषि उपर निर्भरशील थिले एंड कृषिटा जो हमर लेबर इंटेंसिव थिला and in England also in Eastern Europe there was a large conjugal household existed in England after 1750 age at first marriage fell with the incidence of marriage remaining stable and as a result of industrialization that led to deliberate family limitation one finds that as a result of industrialization there was migration to urban centers or for employment opportunities better wages leading to overcrowding of urban sector ग्रामांचल लोक माने सहरांचल को जीविका चाकरी आशारे नूतन जीविका
सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिन्स ऑफ लाइवलीहुड पे सहर सहर अभिमुखी हेले एवं सहर ग्रामांचल छाड़ी सहर आसिया पर सहर गुड़िक क्राउडेड ओभर क्राउडेड जितनी जगह ओभर क्राउडिंग होगा फल स्पेस प्रोब्लेम है जगार समस्या है ड्रिंकिंग वाटर प्रोब्लेम है कम then it lead to crime violence so these things also happen so new norms of methods of industrial production also require new forms of craftsmen which pushed people to move from family to new opportunity इंडस्ट्रियलाइजेशन प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री सिस्टम ना डोमेस्टिक सिस्टम थे फैक्ट्री सिस्टम आसवा फल श्रमिक मैंने फैक्ट्री साइट रे आसिक काम करेंगे तेणु से जो बेटर अपॉर्चुनिटी रहा सहर में काम मिल जॉब मिल अधिका वेज मिल यही सब सुविधा पाई निजर परिवार छाड़ी सहराभिमुखी हेले एंड दे मूव आउट ऑफ देयर फैमिली जेहेतु मूल फैमिली माने जॉइंट फैमिली थिले जॉइंट फैमिली छाड़ी बर्तमान से निज परिवार सेपरेट होकर आसिक न्यूक्लियर सो एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच द न्यूक्लियर फ्रॉम स्मॉल फैमिली development of a domestic industry and new demands for consumer goods provided opportunities for those people to work away from home. Demographic and economic pressures compelled many peasant families to supplement their family income by taking up jobs in rural industries. Migration from families because of employment also affected family ties. सहर रे जो लोक मैंने आसी बसवास कले जो मानकर वेज भल मिलला अधिक मजूरी मिलला से इकोनॉमिक कंडीशन रे उन्नति आसला नाउ दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू टेक एजुकेशन पिला मानक से माने शिक्षार भल शिक्षार सुविधा देवा चेष्टा कले अपॉर्चुनिटी क्रिएट हला सुविधा मिलला अपॉर्चुनिटीज विथ बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज families started to send their children for education in order to have better future और भल पाठ पढ़ले शिक्षार शिक्षित हेले फ्यूचर भविष्य उज्जवल हो से जॉब मिल से आशा करी पे किसी लोग सहर को आसिले सहर रही सहर में भल शिक्षानुष्ठान अच्छी शिक्षित शिक्षित पाठ better opportunity education so that's a factor it is suggested that industrialization and urbanization brought changes in the position of women in the family from the late 19th century तेणु शिल्पायन हवा द्वारा जेभଳି कि आम महिला मानकर नारी मानकर जहाँ कार्यशैली परिवर्तन होची एवं गोटे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से 19th century रे naturally the society was dominated by male people so किंतु ये जो शिल्पायन अर्बन शहरीकरण होची अर्बानाइजेशन शहरीकरण माने शहर में सुविधा तो द फील फ्री एयर मुक्त वायु मुक्त मुक्त चिंताधारा लोक मानकर आसिला वुमेन माने राइट इक्वालिटी पछरे मूवमेंट कले आंदोलन कले दे बेसिकली the women from lower strata or agriculturist background they were coming to work in industries and जेतले politicization होची राजनीतिकरण होची बा डेमोक्रेटाइजेशन होची सरकार गणतांत्रिक पद्धति बा लोक मानक साहाय्य रे सरकार करिबा बा शासन करिया बाटा ही बहुत ठीक केना सेते बेले निजर शासन को वैधिकरण करने दे tried to mobilize the people in their favor and also political parties राजनीतिक दल गुड़िकर भूमिका थिला so let us we shall discuss the another subject that of this unity आउटे हमर जो विषय वस्तु जो दिग अछि से जो दिग विषय में आलोचना करे से गुटी अछि जेंडर व्हाट इज द मेन वुमेन
relationship re what are the changes that happened during this period. Or 19th century is considered a century of domination by men. Women did not have right equal to men, but they were not passive victims. So ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷମାନେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କ ସମକ୍ଷ ବା ସମାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। So in this century women question their marginalization. But the mainstream of life ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ mainstream of life they were staying away from the mainstream, marginalized ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ନାରୀମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ପ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅବଦାନ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। And କିନ୍ତୁ the condition was not favorable earlier, but with modernization and urbanization now condition became favorable for them. ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଯେ ଘରେ ରହିବା, ଘର କାମ କରିବା, ନାରୀମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କରିବା, ଦେଖା ଶେଖା, to look after children, to look after households objects or to perform household chores, ଏସବୁ ଘର କାମ କରିବା, ଘର ଜିନିଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, or to remain in the four walls of the house. ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ସାଧାରଣ ନୋସନ୍ ଧାରଣା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏ କାମ କରିବେ, ପୁରୁଷମାନେ ଏ କାମ କରିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, କାମ କରିବେ, ରୋଜଗାର କରିବେ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବା ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ। ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆସିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଆସି ଯେଭଳି କହିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଲୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମହିଳାମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ କାମ କଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲେ ଏବଂ they came to know about the rights and the duties. So if you take an example, ଯଦି આપણે ଉଦାହରଣ ଦେବା ଯେ 1799 ମସିହାରେ in 1789 ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହେଲା ତ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଆଉଟକମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି the famous outcome of ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ revolution of 1789 that is declaration of rights of man and of the citizen. ଏଠି women କଥା କୁହାହଉନି, rights of man and a citizen. So ଏଥିରୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ women are not treated equally, they are not considered worthy of these things. କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଘୋଷଣାପତ୍ର ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ଗସ୍ପେଲ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। ସେଥିରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଓମେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ ବା those who worked for the betterment, for the upliftment of women. France is Olympique de Gouges ସେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ declaration of the right of women and citizen in place of men and women. So again also we see in Victorian era ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି ଯେ ସେ ସମୟରେ women are marginalized, they are not treated equally. So there are proof, sufficient ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଲିଟରେଚରରେ the women were portrayed angelic figures, innocent, and they are physically weaker. ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ. Like thy name is woman.
सो लिटरेचर मध्य से चित्रण करागला महिला मैंने होती दुर्बल शारीरिक क्षेत्र दुर्बल सो इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड से साइंटिफिक बेस ना सो वुमेन आर फिजिकली वीकर and they are fit for household work. Queen Victoria represented a kind of a femininity around family, motherhood, and respectively became the ideal woman. So, motherhood and ma haba. ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଦରହୁଡ୍ In Robert Bruins's poem Women and Roses, ideal woman was compared to rose bush and rose imagery used to indicate value of love and compassion of a woman. ତେଣୁ ଆମର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ women ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମୋଡିଟି ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗୁଡ୍ସ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଥିଲା କନସିଡର କରାହେଉଥିଲା but that changed that concept changed as a result of education that concept changed as a result of modernization आधुनिकरण आसिला एजुकेशन प्रभाव पड़ा देन ऑल्सो बुद्धिजीवी मानकर लेखनी प्रभाव पड़ा जहाँफल कि आभिमुखी परिवर्तन आसला and there are so many women activists and also we see writers John Stuart Mill famous philosophers and political economist wrote an essay The Subjection of a Woman published in 1869 and in this essay he argued for legal and social equality between men and सामाजिक एवं आईनगत समानता ପାଇଁ से and also we see there is besides that also we see there are also other important women those who are working for the cause of women great writers and also novelist Linda L. Clark in her book Women and Achievement in a 19th century Europe provides a survey of a women's accomplishment from England to Russia between 1789 to 1914. And Olympe de Gouges as a counter to the main document of the revolution 1789 Farsi Rashtra document declaration of the rights of a man and citizen a declaration of rights of man and citizen published her declaration of rights of a woman and a citizen so e jo sabu the books that are published jo lekha sab prakash pala so that are basically urged or basically they emphasized on women equality महिला माननको पुरुष मानक सहित बा men and women should enjoy equal rights social सामाजिक इकोनॉमिक जेमती फैक्ट्री जो मैंने वर्कर्स मैंने काम करते महिला महिला वर्कर्स हेले बा चाइल्ड हेले से को कम वेज दिया फॉर इक्वल वर्क सो इकोनॉमिकली दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटी नथिला सते एंड सो because of these writings and also what changes in structure changes in structure social structures and also political structures modern status so that the environment has changed and also the women they came to know about their rights and duties they also participated in political movements and they also participated large number of movements food rights से भाग नौले विक्षोभ जो food rights क्षेत्र से भाग नौते so slowly and they associated themselves in the mainstream of life and before the industrialization before the women got their civil and political rights a large number of women worked outside their homes during most of the 19th century. However, middle class women did not constitute a significant part of a female labor. What was the nature of work women were engaged at that time? Women who worked in large number mostly belonged to peasants and workers' family. That means that indicates that those industry, the money industry जो महिला माने काम करते ले सेमानकर लोयर इकोनॉमी बैकग्राउंड आस्ते पिजान फैमिली आस्ते केमा वर्कर्स फैमिली आस्ते मेजॉरिटी वर्किंग मैन वेर काम कौन करते
The nature of work, that they performed, that is domestic service. Domestic, they are in domestic service and textile industry. Bionational पर काम करते एवं the rich capitalist man रहले, bureaucrats रहले, bourgeois रहले, मध्यम जो मान रहले rich middle class. So सेठी सब ସେମାନେ domestic service काम करते ମଧ୍ୟ. Major working men are in domestic service and in textile industry. So, in England, in England in 1841 till 1911, most working men were engaged in a domestic or other personal service occupation. In 1911, 30% of women servants and including landresses, 19.5% were textile workers. Total ଯେତିକି women workforce କାମ କରୁଥିଲେ ବା ଯେତିକି ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ବା ଶ୍ରମ workforce ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ କହୁଛି 35% 35% were servants. 19.5% were textile workers and 15.6% were engaged in dressmaking trades. So the percentage of women in a middle class women service sector by white collar occupation. The percentage of women in middle class white collar occupation like teachers, nurses, शिक्षा वृत्ति करते नर्स भाई काम करते shop assistants, secretaries, civil services servants increased in England between 1881 to 1911. So, in this way, we see that the modernization and also the growth of liberalism, new ideas, nationalist movement, so that industrialization, so all that brought a change in the outlook of women. ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ରୋଲ୍ ଥିଲା ସମାଜରେ ଯାହା ଭୂମିକା ଥିଲା ବା ଯେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ନା ଦେ ଗଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି ବା ରହିକି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଦେ contributed a lot. They became economically self-sufficient, and when they became economically self-sufficient, they took their decision. They also participated in politics and also in other activities. ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କଲେ ଚାର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଫାଇଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ କାରଣ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଥମରୁ ନଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେ ଡିଡଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନହେରିଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଇନହେରିଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର जो मूवमेंट है आंदोलन है ताहा फल सेमानकु आस्ते आस्ते ये सब मिला इन फ्रांस in 1896 52% of all single men were labor force 30% were married women and ये सब हवा फल देखा जाउछि जे in spite of oppression that women faced in a male dominated गोटे पुरुष प्राधान्य समाज रे समान मध्य विभिन्न प्रकार शोषण शिकार करथिले in spite of oppression that women faced in male dominated society and cultural values women were not merely silent spectators सब oppress शोषित हेले मध्य समान तांकर संघर्ष जारी रखिले the notion of equality समानतार जो धारणा the notion of equality breaking the dominant notion of a natural male supremacy very much drew the attention of a subjugation intelligentsia जो बुद्धिजीवी थिले सेमानकर दृष्टि आकर्षण है and as mentioned earlier अगर मतलब कहि जे the writings of Virginia Woolf John Stuart Mill and many others many others one finds their voice against women तनु महिला मानकर जो महिला मानक विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन ताक विरुद्ध जो असमानता ता विरुद्ध मध्ये इंटेलिजेंस केम फॉरवर्ड
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେ ଆର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ, ଦେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦ ଓମେନ୍ ଫର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଦେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍, ଦେ ଏନକରେଜ୍ଡ, ଦେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଦ ଓମେନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ and also the political parties, they also played an important role. Politically they become conscious. The emergence of organized women's movement, which began in the 19th century, by the beginning of 20th century, the movement succeeded in strengthening the bond between women and forced the state to acknowledge their rights. तो सरकार ऊपर राष्ट्र ऊपर प्रभाव पड़ा। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन मूवमेंट है, आंदोलन से मान कले बुद्धिजीवी माने मध्य सेमानकर तांको पछरे मध्य सेमानकर हाथ रहिला। तेणु कंटिन्यूअसली आंदोलन फल सरकार मध्य बाध्य हेले, दे एक्नॉलेज, एक्सेप्ट कले देयर इक्वल राइट। मूवमेंट फॉर वुमेन्स राइट एंड इमांसिपेशन, मुक्ति, लिबरेशन, इमांसिपेशन मीन्स मुक्ति, लिबरेशन in Europe was shaped by economic changes as well as political, social and intellectual development. तेणु महिला मानकर ये जो समाज रे तांकर भूमिका रे तांकर कंट्रीब्यूशन रे तांकर भागीदारी इस जो परिवर्तन आसुची, तो तार कारण होची पॉलिटिकल ग्रोथ होची बा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैला। जे भाबळे हमर फास्ट थिला एब्सोल्यूट स्टेट थिले, एब्सोल्यूट स्टेट असले नेशन स्टेट्स हैला, नेशन स्टेट मॉडर्न स्टेट आसे। सो ताहा मध्य सोशल सामाजिक क्षेत्र रे मध्य परिवर्तन हैला। फूड राइट्स हैला, वर्कर्स माने आंदोलन कले। सो दे गॉट इंस्पिरेशन, सितर से मानको उत्साह मिलला। फूड राइट्स हैला, लिबरल मूवमेंट्स हैला, रेडिकल्स माने दे फॉट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स, इंडिविजुअल राइट्स बा व्यक्ति स्वाधीनता ऊपर फोकस दिया गला। सो सेमानक मध्य गोटे जागरण सृष्टि हैला, ताहा जागरण ताहा आंदोलन रे परिवर्तन हैला। आंदोलन द्वारा ही सरकार प्रभावित हेले, चापग्रस्त हेले और एक्नॉलेज देयर राइट्स। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन मध्य बहु क्षेत्र रे but to great extent help them to fight for their right to vote, voting right. As a result of this, as a result of constant movement and pressures, or following the long struggle, both the House of a British Parliament passed the Representation of People Act, giving women above the age 30 voting right. जो मानकर 30 वर्ष अधिक था सेमानकु भोट देबार अधिकार मिलला। Later on in 1828 all parties supported equal franchise law, giving equal political right with men. राजनीतिक अधिकार मिलला, भोट देबार अधिकार मिलला। पुरुष मानक सहित महिला मानक मध्य भोट देबार अधिकार मिलला। से जो भोट देबार अधिकार मिलिया द्वारा गणतंत्र सुदृढ़ है एवं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तांकर जो सहयोग रहला बा से जो समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल हेले। आगुर जो अलग सेपरेट ही रोथिले, जे महिला कहतला महिला माने दुर्बल से माने काम करिए, पुरुष माने काम करिए, ई सब समाज मुक्ति मिलला एवं समानकर कंट्रीब्यूशन देला त समाज सुस्थ वातावरण सृष्टि हेबारे सहायक कला। सो तेणु इंडस्ट्रियलाइजेशन आसिया फल शिल्पायन हवा फल इकोनॉमिक ग्रोथ है, जॉब मिलला, एजुकेशन है, इंटीग्रेशन हेल्थ मध्य फैसिलिटी आस। सो ऑल दी सामग्रिक भाव में जे यार मध्य प्रभाव पड़ला एंड दैट आल्सो changed the equation, the relationship that existed between men and women. So in this unity we have already we discussed that how from mid of 18th century अष्टादश शताब्दी मध्य भाग यूरोपियन देश गुड़िक किभली भाव गोटे नाटकीय भाव में देखिले जे जनसंख्या वृद्धि होची, सेटा गोटे देश द विटनेस गोटे नाटकीय भाव, दैट मीन्स rapid growth of population. Not only that, also the pattern of a population growth varied in different European countries, as scholars working on history of population growth have identified various factors like changes दिवाली हार जो फैक्टर जाक आम आलोचना कले, जन्म हार, मृत्यु हार, डिक्लाइन इन मोर्टालिटी, मृत्यु हार कमिबा,
migration, Sthanantara, all these things. Direct linkage between population and economic growth is debatable. The family is an institution due the attention of historians to understand the historical changes since 1960 movement, women movement ଆସିଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି. So after a prolonged struggle, they succeeded in gaining equal rights with ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଲା. So let us we shall discuss another unit, that is nationalism and nation states. So what is nationalism and what is nation states? State କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଏରିଆ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ sovereign power ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଛି ସେଟା ହେଲା states. ତ nation states ହେଲା nation states, that means one type of that is the people who live in that station, sovereignty there, population is there, କିନ୍ତୁ ସମାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇଡିଓଲୋଜି ରହୁଛି ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ. ତ ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ. ସୋ in this way we see nationalism is a important sectors जोटाकि ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସହିତ ଇମୋସନ୍ ସହିତ attach love towards their mother country. So nationalism and nation states are different. Each person has a sense of attachment to the nation. And nationalism takes the shared sense of attachment to a particular nation and uses it to justify political action. Modern state ର basis ହେଲା ଶାସନ କରିବାର nationalism. Modern state मध्ये ବିଭିନ୍ନ different ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିଟି ଆଣିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ଡେଭଲପ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍. ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ମିନ୍ସ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ୱାନନେସ୍, ଏକତା ମନୋଭାବ. ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ we have different India irrespective of caste, color, religion, we think that we all are Indians. So it's a national feeling, nationalist. So the nationalists worked hard for this, and we frequently misuse these terms nation state and nation states. States are defined by nation states सामंजस्य मध्य अछि. States are defined by sovereignty, सार्वभौमत्व. State is all powerful over the territory and group of people. Nationalism acquired more democratic character in the period of mass politics, and in the late 19th century national जोटा कहे जर्मनी यूनिफिकेशन है, इटाली यूनिफिकेशन आछे, इटाली जर्मनी यूनिफिकेशन 1871 and also Italy unification. So the basis of this unification is the nationalism, feeling of oneness. And किंतु जो जर्मनी एकत्रीकरण है बा इटाली एकत्रीकरण है सेथिरे we know that Bismarck played an important role in Germany unification, and with the help of Russia, the most powerful state तांका भीतर जो प्रुसिया थिला. सो ता देखले जे प्रुसिया साहाଯ୍ୟ ହିଁ जर्मनी यूनिफिकेशन है पारिबो. with the help of Russia it will be possible. किंतु जो nationalism यूरोप रे डेवलपमेंट हला, नेपोलियन played a very important role. It was Napoleon who reduced the size of before unification in Italy and also in Germany there are a number of states and that were reduced to significantly because of Napoleon Bonaparte. So Napoleon Bonaparte also played an important role, and also French army that spread nationalism. ସେମାନେ ୟୁରୋପ ରେ ଯାଇ ସବୁ ୟୁରୋପ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଲେ. ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଲେ. ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲେ. ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେଖାଗଲା. ସୋ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମେ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର. ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ଏକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ, ତ ସେଠାକାର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନଥାଏ. So linguistic identity, a sense of ethnic or linguistic national identity is also very, very important. That nationality means nation tries to develop identity and a loyalty.
And when it is created, so it will be easy for the state to implement its policies because people will accept it. Taxation or what is it? Control over legislation. The modern need modernization theory currency that mostly common accepted as a theory of a nationalism. So nationalism खाली जे जर्मनी रही इटाली में जर्मनी यूनिफिकेशन आला इटाली यूनिफिकेशन आला ग्रीस चेक रिपब्लिक्स and so many European states में nationalism देखा जाता है. So यार result होची जे industrialization, modernization, liberalism, spread of liberalism, and also strong modern state. Thank you.